एक बार आके तो देखें मुखर्जी नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर में। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। This exam is not that difficult. The competition makes this exam difficult. Yeah. This UPSC thing is a loop. It is an undeniable fact that every year precisely 10 lakh aspirants sit for UPSC examination, while only a handful of them come out with flying colors. While the stats are a reality, what strikes as a thunder is the statement given by PM's economic advisor, Mr. Sanjeev Sanyal, who states students should stop preparing for UPSC examinations and rather focus on building startups and becoming billionaires. I'm here at Rajinder Nagar, which is considered to be the hub of UPSC aspirants, to understand their take on this statement. कई लोगों के ओपिनियन है कि देश की सेवा करना और ये सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है। अपने जेन्युइन सपने को पूरा करने के लिए दिन रात लोग एक किए हुए हैं और उनको बैठे बैठे लगता है कि लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बार आके तो देखें मुखर्जी नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर में कि बच्चे अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक मेहनत कैसे कर रहे हैं। मिडिल क्लास वालों के लिए ये एग्ज़ाम एक बूम है जो आपको डायरेक्ट मिडिल क्लास से एटलीस्ट हायर मिडिल क्लास तक पहुंचा सकता है। This UPSC thing is a loop. So once you get into it, you are just in it. You can't get out of it. And if you do not clear it, you are like, okay, my preparation is done. I have to do the revision thing. So you give it again. Then again, 21 to 29 years of age is very productive time, and you can give that time in more creation of something or in business. For everything there is a pros and a cons. He said what is like waste of time, it's a valid point. बट यूपीएससी में कॉन्स्टेंसी भी होना चाहिए। स्टेट्स में ऐसा है अभी भी क्वालिटी ऑफ एस्पायरेशन पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली वर्क करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट फुलफिलमेंट्स दे कैन डू एट दैट प्लेस। Yes, I do think it exists because most of the people who are preparing for UPSC are middle class and lower middle class strata. As we have a colonial background, so it's always like this babu thing. Even the parents, even if we think in lower middle class and middle class families, it's more like you would see a family of a girl, they would see their prospective son-in-law to be a government servant. I think UPSC aspirants are one of the most aspirational students there are. So there's no poverty of aspiration there. Unemployment is something which is very much affecting the people who are in the bracket of 20 to 25 years of age. It's also because we don't have a lot of opportunities. That is why people come into government jobs as such, the first thing. And it's not about poverty of aspiration, it's about not having that opportunity to put your aspiration in some place. End of the day, this is also an unemployment where you spend your 22 or 21 to 28 years of your life of 6 attempts into something that, by percentage wise I'm telling, where you have 0.01% of success. This exam is not that difficult. What the competition makes this exam difficult. Yeah. It's not lack of aspiration, not at all. कुछ हद तक अगर आप देखोगे तो कोरिलेट करता है, लेकिन आप देखोगे तो पूरे हद तक तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक सक्सेस जो है ना उसको आप मेजर कर सकते हो। एस्पिरेशनल सक्सेस को मेजर करने का कोई आपके पास कॉन्क्रीट तरीका नहीं है। मैं बोल दूं कि आज तो मैं 10 करोड़ के रूम्स बनाना चाहता हूँ, ये मेरे एस्पिरेशंस है। अब बने या ना बने बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं करता, बट कुछ हद तक हम एस्पिरेशनल सक्सेस जब तक नहीं चाहेंगे तो इकोनॉमिक सक्सेस होना भी मुश्किल है। एक्चुअली ये पॉसिबल है नेक्स्ट 50 ईयर्स में मैं कहूँगी, क्योंकि अब हम स्किल डेवलपमेंट और उन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा इन्फोसिस कर रही है। आफ्टर 50 ईयर्स तब ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है टिल 10, 12 इट्स ऑल ऑन मगिंग अप, ratification. Even after 12th, most of the people, for example, engineers, if we take one branch, not everyone is from a very renowned institution of engineering, and you would see there are thousands of private engineering colleges which produce engineers which are not up to par with today's need, and they are not given that knowledge, that skill development. They are not educated enough in their colleges. Private colleges में उतने level का education नहीं होता है। engineering college में उतने level के आपको instruments नहीं provide करते हैं। They were not giving us that knowledge that was needed outside. My motivation to not go in that field, in corporate field, kind of reduced, and that's why I think that it was also one of the factor that I came into UPSC. ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी करते हुए आप बिलियनर्स नहीं बन सकते। जैसे कई सारे आईएएस ऑफिसर हैं जो यूपीएससी करने के बाद भी अच्छे स्टार्टअप्स हो गए या कोई साइंटिफिक रिसर्च हो गए,
उनमें वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो देश के लिए और प्लस अपने लिए भी वो चीज़ अर्न कर सकते हैं, मनी जो एक बिलीनियर्स करता है। बिलीनियर्स इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैपिटल, जो कि एक मिडिल क्लास बंदे के पास नहीं होता। दे डोंट हैव कैपिटल एक्सेस टू स्टडी अब्रॉड, एक्सेस टू स्टडी इन हायर MBA कॉलेजेस। लोग फॉर मिडिल क्लास दिस इज द थिंग that is with us, so we are preparing for that. मैं डेफिनेटली एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहूँगा, ब्यूरोक्रेट जनरली, क्योंकि ब्यूरोक्रेट बनने से हमें थोड़ा सोसाइटी के बारे में नॉलेज मिल जाता है। Billionaire? No, bureaucrat. Yeah. Because there is one friend of mine and his mom was an IS officer. So now she's working in WHO. So she's earning more than what she used to earn when she was in service. And one thing she told me that when you will be in the service, right, you will get the authority to hold such great positions where you can influence people in such a manner that you can change their life in a positive way. अपना 100% देना है। अगर 100% देने के बाद ये लगा कि अब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, जो मर्जी होगी उस हिसाब से चला जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर मेरे खुद के एस्पिरेशंस को फुलफिल करूंगा। लेकिन अगर मेरा UPSC में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोसाइटल एस्पिरेशन को भी कंप्लीट या फुलफिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी मुझे। एक महीने के लिए I'll feel bad and upset that after giving so much of time and energy to it and dedicating myself completely towards just one preparation and then getting nothing as a result, I'll obviously be depressed. But at the end of the day, life has to move on. I have to move on. So I'll go for another profession, maybe banking sector or SSC CGL. अगर मेरी age limit नहीं हुई हो तब तक। Right now, I'm not thinking that I won't get selected. But yes, if I don't get selected, first of all, it would really impact me a lot because I am giving my everything to it. Like my time, my energy, my youth, that is, there would be a mental breakdown. Yes, it will impact a lot, but we will try. We will try to in other fields also. मतलब और भी फील्ड्स हैं, हम उसमें ट्राई करेंगे। हम वहाँ पे रुक भी नहीं सकते हैं हम लोग। और भी सर्विसेज है, पीसेज है, अगर वो भी नहीं है तो फिर प्राइवेट में ऑप्शन है अभी भी। ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो करेगा ही, फैमिली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल रही है अभी तो लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। प्लान A, प्लान B, प्लान C सब UPSC है। I have, but not completely thought about it कि execute कैसे करना है अभी। Yes, actually not at the start when you actually start your preparation, because then when you have a plan B, it's actually saying like okay, it's more like you do not give your 100% because you already have a plan B after your first attempt. And if you think what is your level of preparation and everything and all the aspects around it, I think you should devise your plan B. While the dilemma continues to bother and boil these aspirants, they still persevere the brunt till they collapse. Some follow the same aspirations because of their economical background, some on a similar notations, while others move on to a different venture.